बहुत ज्यादा हुआ नहीं है उससे चेंज। जी 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 जी। आशीष जी नमस्कार। हाँ, आशीष जी के अग्रवाल साहब जो चेयरमैन थे, ही वाज टेलिंग मी कि उनके यहाँ भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और उन्होंने अभी नया शुरू किया है स्कूल विद इन ईयर और टू और समथिंग लाइक दैट, एंड दे आर एफिलिएटेड टू नेपाल बोर्ड ऑफ एजुकेशन and have been conducting classes for 2-3 years. Now they are planning to go for CBSE system. जी। आशीष जी नमस्कार। गुड सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। ये सर वो गुड वाले में जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाता है कि मॉर्निंग मॉर्निंग So you आफ्टरनून have इवनिंग क्या कहूँ। you have devised a simple way. हाँ सर नमस्कार, बढ़िया है, सबसे बढ़िया हिंदुस्तानी सिस्टम, बाकी Sir, सब तो शुभ रहता ही है। regarding which school you were talking? I was talking about your school. Mr. Agarwal only told me yesterday that he was having Yes, hexagonal shape of yes, classrooms. yes. Hmm. There is one Mr. Amit Bajaj also from CRPF school New Delhi. So he was also telling me the same Sir, thing कि sir, उनके यहाँ भी जो है they have got hexagonal structure of this thing, classrooms. sir. Actually, sir, I think you remember some days ago I had words with you regarding जी personalized training, but जी by that time there was a network issue at your place last time. नहीं सर, मेरे साथ इशू था, मेरे बैग में वो थोड़ी सी जवानी का जोश चढ़ गया, तो वो सिलेंडर वाला हाँ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रख गया भरा हुआ। हाँ 60 साल की उम्र में जवानी दिखाएंगे तो यही होगा, मैंने सोचा चलो लेके चलते हैं। आ तो गए ऊपर तक, यस बट थोड़ा सा आधा एक घंटे बाद वो बैक पेन जो शुरू हुआ है उसने मेरे 5-8 दिन ले लिए मेरे, जिसमें से 6 सर दिन तो सर मेरी सर फिजियोथेरेपी चली। सो दैट सर वाज द प्रॉब्लम विद मी, नॉट विद द सिस्टम और समथिंग सर लाइक दैट। actually, sir, we are a very new school, जी and we have means my promoter, they have developed this school on international what we can say pattern, international way, that whatsoever the facilities, amenities, things are there हम्म, in any international school, that those facilities, those amenities we are having at our school, but जी we are encountering one problem. टेल मी। Problem is like that, that because we are a very new school, we have got children from various dimensions, फ्रॉम various dimensions, ओके, various culture, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, various कम्युनिटीज एंड ऑल दैट। different schools. Yes, गुड so इवनिंग we राखी जी, गुड meet. इवनिंग। Yes, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। so means I am encountering a discipline problem inside my school. ऐसा क्या है, Means ऐसा there's किस not वजह से? that means what is my opinion, that just because of they are from different schools, different cultures. दैट इज राइट, दैट इज राइट। नहीं, So कल्चर तो and सर यहाँ हिंदुस्तान के भी किसी स्कूल में एक ही कल्चर के, एक ही कम्युनिटी के या एक ही सैलरी स्लैब के बच्चे नहीं होते हैं। दे ऑल yes, कॉल yes, फ्रॉम डिफरेंट। I yes, what I should say, that because they are from different schools, they have different kind of habits. That is why we are what we can say encountering discipline problem. हो जाएगा सर, डिसिप्लिन के लिए भी आज हमने तो थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में एक एक स्लाइड में 3-3 4-4 सेंटेंस है। रूल्स, Sir, रूटीन्स, प्रोसीजर्स, sir, कॉन्सिक्वेंसेस, sir. कम्युनिकेशन, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजेशन। बहुत छोटे छोटे Sir. से हैं। मैं रूल बुक आपको बाद में भेजूंगा, अभी 3-4 दिन तो लगेंगे मेरे को एडिट करने में। दैट इज No एडिटेबल एज problem, पर sir. योर स्कूल। Number one is Sir. I will be sending you the PowerPoint, direct PowerPoint
which will be consisting of the rules, regulations, Sir, procedures, sir, और जिन्होंने rules को तोड़ा है उनके लिए consequences क्या है? I don't know sir. what the system is in Nepal, but in India corporal punishment is strictly banned. जिसमें हर The same तरीके thing के is there, sir. हर तरीके के punishment है, including the harsh words. अगर आप किसी Sir. बच्चे को मूर्ख कह देते हैं, that means Sir. you have physically tortured the child. मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे चालू होने में 2 मिनट हैं. You please open up your videos so that I can see and physically the presence of everybody. Just 2 minutes. तारिक मकबूल जी नमस्कार. जया जी नमस्कार. That is great. So great of you people. राखी जी नमस्कार. आप लुधियाना से है ना राखी जी? जल्दी बंद करिए जरा सब लोग आ जाएं एक बार स्क्रीन पे. That will be my sort of consolation कि yes, everybody is there. Most of the people are there. Just open up your video only for 2 minutes. As soon as I would like to start, I will ask you people to stop your videos, mute yourself. And Lakshmi ji is also there now. Good evening, sir. Good evening, Yes, ma'am. sir. Good evening. तारिक जी आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करके बताइए. जी आई एम फ्रॉम कश्मीर. कश्मीर कौन सी जगह से? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, श्रीनगर से कुछ 50 अच्छा. किलोमीटर. हाँ. There is some place called Belgaum. I have been to there in January. वहाँ पे आयशा अली एकेडमी करके एक स्कूल है. फिजिकल वर्कशॉप के लिए गया था मैं वहाँ पर. Yeah, actually that is some 12-13 kilometers away from us. सर वहाँ पे तो इतनी बर्फ पड़ी हुई थी कि ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी. लोग कह रहे थे कि जब ये मेल्ट होनी शुरू होगी then you will get. तभी मालूम पड़ेगा कि ठंड क्या होती है. ठंड तो होती है लेकिन ठंड तो होती है लेकिन वो बाद में ही होती है. मजा आता है काफी. चलिए सब लोग अपना वीडियो ऑन करने के पक्ष में नहीं है. 5 minutes have gone. So now I am going to start sharing the screen. Mute yourself, stop your videos and let us start the journey. बहुत ज्यादा नहीं है. जो भी questions आप म्यूट कर लीजिए, अच्छा लगेगा. सब अच्छा लगेगा, म्यूट कर लीजिए बस. I have to put in myself, everybody on mute, so I am really sorry for that, but I don't have any other option. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. You see, yesterday somebody only told me that there was some system. मैंने जो करा नहीं था, कवर अप नहीं किया था. रूल से पहले मैं वो आपको दिखाऊं 2 स्लाइड्स मैंने आज ही बनाई है बैठ के. U shape. U shape is this, where you can see. अमित जी ये बात हो सकती है कि हेक्सागोनल में अगर हम 3 ये ऐसा का ऐसे ही रहे, सब डेस्कों को पीछे पीछे कर दें तो 2 डेस्क कॉर्नर पे लग के 4 स्टूडेंट्स और एडजस्ट हो सकते हैं, which means they will be now say around 6 12 और 8 20 हैं तो 24 हो जाएंगे. But there is another structure where you can go for W structure. और W structure क्या होता है? उसमें सिंगल बार भी है. Just see this. I don't know whether this is existing or not, लेकिन W structure जो है, it is very much existing in some of the schools. वो change कर लेते हैं. This is for the purpose of group task number 1. And number 2 is, this can be utilized for the purpose of looking at each and every individual's face independently, without moving, without disturbing other fellows, other students. You can move around. And moreover, the thing is that, can you see my pointer?
pointer. This particular part of the class with 42 students is available for your activity. This particular part. So if you have got any sort of activity, central part is made vacant due to this type of arrangement. So we go ahead. The second next component is rules. Now देखिए अभी rules हम लोग जनरल भाषा में बात करें तो rules are basically not very much different than procedures. जो procedures होते हैं, if you follow them strictly, then they are called rules. If the procedures are followed in right spirit and majority of the community over here is considered to be the community of the school. That means the students. And obviously, to some part, the teachers are also there. Teachers are also expected to follow these rules. Let us say, for example, running in the corridor is prohibited. That is a rule. And that rule is valid and is valid means it can be implemented. It should be rather followed by all the teachers also. It is not like that that I am coming out from the class and the bell is rung. I am now running in the corridor to the staff room, putting my previous material, getting my next material, and then running down to the next class. Running is prohibited means prohibited for everybody. So that is a soft skill that is called time management. You see, everybody must understand one particular concept, that one class is considered to be of 40 minutes, total period. But that is not the instruction time. The instruction time is 32 to 35 minutes. 5 minutes are considered to be transition time, transition period, which means you stop lecturing in one lesson, go to the staff room, and then move on to the next class. So this will take nearly 3 to 4 minutes. Then 1 minute more, 2 minutes, 3 minutes more to organize the class, keeping them quiet, take out the books, take out your textbooks, and let us start. Yes. अभी हम जैसे सीरियल्स पढ़ते हैं, सीरियल्स देखते हैं, जिस दिन भी हम सीरियल देखेंगे उसमें हम देखते हैं सबसे पहले आता है अब तक आपने देखा, and then they will recapitulate. उसके बाद उस दिन का मेन सीरियल आएगा, मेन बॉडी, and then after that at the end अब तक आपने देखा, which means in the lesson also, the delivery of lesson also, we must follow these simple rules. First is recapitulation of last lesson. Number 2, then the main body delivery, sorry, delivery of today's lesson. And next, recapitulation of today's lesson means what we have studied today. That is recapitulation. Now care. You see, most of the persons, most of the teachers or parents will come to your school not only on the basis of your infrastructure. मैं देखता हूँ अभी बोलते हैं स्टाफ ये स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे पास, वो टच बोर्ड वाला हमारे पास वो व्हाइट बोर्ड है, और हर क्लास में वाईफाई है और सीसीटीवी कैमरा है, which means कि you bother for the care and safety of the students. But these are the things which are, it is technology. And these are the elite schools, which means they should not be considered to be what you call top schools. Top school means where the teaching and learning process goes on very smooth and a learning environment is existing in the school. That is top school. मैंने तो राजस्थान का एक स्कूल देखा है, वहां पे बच्चे नंगे पैर आते थे, and then they used to talk in English.
ठीक है, बहुत स्लो बोलते थे, कम बोलते थे, लेकिन हाँ डोंगी पानी, यस डोंगी पानी इन मध्य प्रदेश, आई एम सॉरी नॉट इन राजस्थान, डोंगी पानी, कहीं आप देखिएगा डोंगी पानी वीडियो करके, यू विल सी दैट नंगे पैर बच्चे आ रहे हैं, एंड स्टिल जैसे रटा रटाया होता है इस तरीके की, वो मेरे साथ भी इंग्लिश बोले, सबके साथ बोलते हैं, आपस में भी वो एक कल्चर बन गया. And slowly when the class 4 and 5 student who is coming from the rural background, जिसके पास कुछ भी नहीं है, टैब वैब और ये मोबाइल की तो बात बहुत दूर की है, कुछ भी नहीं है, जो नंगे पैर आएगा उसके पास क्या होगा, and still they are talking in English means there is some fire inside them to learn. There is a fire inside the teachers also, that they can learn from the teacher. The teacher is dedicated, the students are dedicated learners. That is called learning environment of the school. और जहां पे वो होता है, that is considered to be the top school. टाइल्स लगा लें, स्लिपरी फ्लोर हो, नहीं होगा. Now second thing, safety security, तो number one expectation of the parents. Number two is what expectation they consider. जनरली मैंने देखा है 90% केसेस में, जब तक मैं 18 साल प्रिंसिपलशिप करी है मैंने, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पेरेंट्स कम कि सर हमारे बच्चों को दो चीजें सिखा दीजिए, एक तो इंग्लिश बोलना और दूसरा उसको ऑफिसर बना दीजिए. मैंने कहा भाई यहाँ तो हम इंसान बनाते हैं, ऑफिसर तो नहीं बना सकते, बिकॉज इंसान बनाने के लिए अभी 21st सेंचुरी स्किल्स जो है ये अब आई है, दे हैव बीन डॉक्यूमेंटेड. But they were existing in the top school right from the beginning. And how they were existing is that they were implementing these things slowly and slowly over the years, and then they established the culture. That is their expectation. जब officer like quality आप एक बच्चे के अंदर instill कर दें, which means the expectation is met out. Officer like quality, जिसमें कम्युनिकेशन आता है, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बेसिकली कंसीडर टू बी 12 skills. I will be having my next webinar on this only, and on that basis, that is the expectation is met. The parents' expectation of creating an officer out of my child is met out, and then their reinforcement not only through instruction but by practicing them. And practice is done not only by students but the teachers also. So ये दो चीजें हमने कर ली हैं, procedures and this thing, rules. Procedure क्या है? For example, I am telling you, when you are moving out of the classroom, I mean to say whole of the class, what is the procedure to move out the class? The first line nearest to the door will stand up, they will move out of the class and stay over there. The second row, the first student will follow the last student of the first row and follow where they are going. While you moving, you don't have to rub your feet on the floor. You don't have to run. You don't have to try slippering, because generally the floors of these schools are tiles. So you don't have to go for that. So this is a procedure. The procedure is that while I am asking a question, you will raise your hand. When I ask you, then only you will answer, otherwise not. 1 or 2, 3 verbal warnings. And then there will be consequences. मैंने बताया आपको, rules की PPT, routines की PPT, procedures की PPT, and consequences. Everything I will send along with your certificate of attendance and the recordings of both the sessions. एक recording मैंने कल भेजी थी, and I believe so कि even 25% भी लोगों ने देखने की कोशिश नहीं करी, because most of the time I am getting on my WhatsApp the messages कि सही I didn't get the certificate. Of course certificate is right required, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं, आप एक लकड़हारे की तरह एक कुल्हाड़ी से पेड़ गिराते रहें, जिस दिन शार्प होगी आप कितने पेड़ गिरा देंगे? 20 पेड़. सेकेंड डे थोड़ी सी वो खुरदुरी हो जाएगी. So you will come down to 18, then 15, and slowly you will lose your skill.
तो ऐसा कहा जाता है कि स्किल्स का अपस्किलिंग, रीस्किलिंग जरूरी है. फर्स्ट यू skill yourself, then reskill yourself, and then upskill yourself. क्योंकि ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, ये 21st सेंचुरी में इनको जो स्किल्स चाहिए होंगी, एक नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट इन द क्लासेस और क्लासरूम्स इनसाइड द स्कूल, आउटसाइड देयर आर लाइफ स्किल्स आल्सो. 5 लाइफ स्किल्स आर देयर. वो लाइफ स्किल्स भी इनके अंदर होंगी और ये 12 all 12 along with some other soft skills they will be very much imbued. आजकल देखिए, मैं बताऊं आपको, कोचिंग सेंटर्स में भी और इवन डिग्री कॉलेजेस में भी, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, मेडिकल में भी, एक हफ्ते में 2 पीरियड्स दे आर डेडिकेटिंग टू द सॉफ्ट स्किल्स, so that how you have to behave properly and professionally. And same thing is required for us as a teacher also. मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 2-3-4 साल के अंदर ये जनरेशन जब तैयार हो जाएगी, पेपर क्वालिफिकेशन तो इनके पास सारी होगी, मास्टर्स भी होगी, बीएड भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा. और एक्सपीरियंस 1-2 साल के अंदर ही अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स का इतनी होनिंग कर लेंगे दैट देयर विल बी डेंजर टू मी. अगर मैं टीचर होता तो मेरे को खतरा हो जाता कि ये नई जनरेशन मेरे से कम पैसे में आएगी. मुझे अभी 70,000 रुपए मिल रहे हैं पीजीटी की तरह, ये नई जनरेशन वाले 40,000 में आएंगे विद न्यू स्किल्स, दैट इज 21st सेंचुरी स्किल्स. तो ये लोग क्यों नहीं, इनको मैनेजमेंट क्यों नहीं प्रेफर करेगा? एंड सर्टेनली आई विल बी आउट ऑफ जॉब एट द एज ऑफ 48, 50, 55. फिर क्या होगा उसके बाद? घबराने की कोई जरूरत नहीं है. या तो अप स्किल करिए या ट्रेनर बनने की कोशिश करिए. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. अब ये सब चीजें प्रोसीजर्स, रूटीन्स एंड रूल्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि रूल्स अगर बिल्कुल क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देन ओनली देयर विल बी डिसिप्लिन. मैंने कहा था लिमिटेशंस फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. फर्म होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए. That I give you chance to keep on improving and improving and improving until I see that now there are no chances of you people improving anymore. मेरे इतना बोलने के बावजूद अगर आप improve नहीं करते हैं, then there are 7 levels of consequences. एकदम से उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में भी नहीं ले जाना, एकदम से उसको स्कूल से भी नहीं निकालना, एकदम से पेरेंट्स को भी कॉल नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली जो है पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है. कॉर्पोरेट सेक्टर में भी दे आर ऑल गोइंग फॉर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, और वही हमारे सेक्टर में भी होने वाला है. सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर हैविंग रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, कॉन्सिक्वेंसेस, एवरीथिंग कंपाइल्ड टुगेदर. एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन या अभी जो जिन्होंने प्रिंटिंग करवाई है वो एक बुकलेट दे देते हैं. उस बुकलेट के साथ ये सारी चीजें होने के साथ एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल करने, नॉट ओवर रूल रादर फॉलो करने के लिए, और पेरेंट्स को भी एक थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ वार्निंग देने के लिए देयर इज सम वन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट which can be taken rather on an affidavit paper, stamp paper of 5 rupees as an affidavit from the parent. और वो मैं भेजूंगा आपको, आप चिंता मत करिए, वो रूल बुक में भी है, वैसे भी मैं भेजूंगा आपको. नाउ कंटिन्यूअस फॉलोअप होना चाहिए कि डिमेरिट्स है, डिटेंशंस है, दूसरे ऑफिशियल रिप्रिमांड्स हैं, क्या हो सकते हैं, आई विल गिव यू. लेकिन नो कॉर्पोरल पनिशमेंट. और कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए करने के लिए मैं आपको बताऊं, अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के आएगा तो हम बताते हैं. कॉर्पोरल पनिशमेंट में स्पैंकिंग, शाउटिंग, यूजिंग हार्श वर्ड्स, पेंसिल बिटवीन द फिंगर्स, नकल्स पे डस्टर के साथ मारना, कान उमेड़ देना, जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी हो रहा है. कभी कभी यदा कदा sometimes there are certain newspaper reports that yes, यहाँ पे इस स्कूल में इस टीचर ने ये करा. So they are strictly banned. Now scheduling. Scheduling means time management. पहली बात है stay on time. जो काम करना है stay on time. मेरा शेड्यूल अलग है, आपका शेड्यूल अलग है, लेकिन स्कूल जो है वो सबके लिए 8 ही बजे खुलेगा.
मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी है 3 जनों की देखभाल करना, आपके पास जिम्मेदारी कुछ नहीं है, तो यू कैन गो अ लिटिल बिट लेट, नॉट लेट, यू कैन get out of bed a little bit late, not go late. A little bit late, you can go out, which means you can go for half an hour more sleep. और ये होता है critical thinking. आपकी आंखें खुल जाती है. Now you critically think कि whether you have to get out of bed or you can get more rest for half an hour. Think about the consequences कि क्या होगा. Now leave period or space between two assignments, whatsoever the assignments you are giving. This is time management. Space between the activities. Lunch या recess करने के बाद जब वो बच्चे आते हैं, then you have to give them some space, some time to settle down. Homework collection में you have to give them some time. हालांकि प्रोसीजर्स का जो मैं पीपीटी दूंगा तो आपको ये सारे प्रोसीजर्स मिलेंगे कि होमवर्क कलेक्शन वेरी स्मूथ, without disturbance, without anybody getting out of his desk. Anybody means not even homework monitor or homework officer. मैं ऑफिसर ही बोलता हूं उनको अब अभी, क्योंकि जब पेरेंट्स ने बोला है कि मेरे बच्चे को आप ऑफिसर बना दीजिए, तो मैं पहले ही दिन से उनको एक ऑफिसर का टैग दे देता हूं. वो यहाँ पर अपनी छाती पे लगाते हैं, होमवर्क ऑफिसर, वाटर ऑफिसर, विंडो ऑफिसर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, वॉशरूम ऑफिसर. और वो पहले ही दिन घर जाके देखते हैं, देखो मम्मी मैं ये बन गया, आई एम नाउ ऑफिसर ऑफ माय क्लास. सो दैट वे वी कीप ऑन डूइंग. मैं सारी चीजें आपको इसी पीपीटी के साथ दूंगा. नाउ रेगुलर शेड्यूलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग टास्क. जब शेड्यूलिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो सर्टेनली यू विल बी अनाउंसिंग बिफोर हैंड कि कल हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे. यू हैव टू ब्रिंग आउट दीज मटेरियल्स. कल हम लोग ज्योमेट्री करेंगे, यू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री बॉक्स. बट उसके साथ ये भी है कि मुझे भी तो अपने साथ एक वुडन ज्योमेट्री बॉक्स रखना पड़ेगा. अमित बजाज जी यहाँ पे बैठे हैं, और भी मैथमेटिक्स के टीचर बैठे हैं. दे माइट बी नोइंग देयर इज अ ह्यूज वुडन बॉक्स इन बिटवीन. उसके बीच में क्या क्या रखा होता है आई डोंट नो, बट दे आर ऑल मैथमेटिकल इक्विपमेंट्स है. उसमें प्रोट्रैक्टर भी है, कॉम्पस भी है, एंड ऑल दैट. Firm and fair with timing, date, etc. everything. Procrastination इसमें आपको avoid करनी ही पड़ेगी under all circumstances. कि अभी चलता हूँ, बेल बजने वाली है, 2 मिनट है, मैं खाली पीरियड में बैठा हूँ, still I wait for the bell and then I move on to the class. That is wrong. Why can't I go to the class and wait bell to ring, another teacher to come out of the class, and then I enter and start? So that even students don't have that much time to move around and waste. So no time for procrastination. Organization में क्या होता है? Keep everything in order. I am not talking about the organization as an institution. Over here, the organization means to keep everything in order. Homework copies कहाँ रखनी है, क्लास असाइनमेंट्स कहाँ रखने हैं, लेसन प्लान्स मेरे पूरे 3 महीने के लिए तैयार हैं. फॉर द नेक्स्ट 3 months आई एम रेडी विद माय लेसन प्लान. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आई यूज्ड टू आस्क द टीचर्स टू प्रिपेयर 2 lesson plans for 1 month, and I will go any day जो डेट, टाइम, पीरियड लिखेंगे वो 15th October, 6th period, 6th A, mathematics, calculus and this unit. पूरा का पूरा लेसन प्लान में लिखा है. वो प्रिंसिपल के पास होता था. Anytime he will take his observation format or go. There are 4 formats for the classroom observations. जिसमें पहला तो self assessment होता है. That is, the teacher writes about himself, and then he goes for monthly, then quarterly, then half yearly, and then annual. Annual is called ACR, that is annual confidential report. Now this is also to avoid wastage of instruction time. आपके पास सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं. क्लासरूम में अगर आपका है कोई लॉकर तो वहां पर, स्टाफ रूम में आपका पिजन होल है तो वहां पर, everything is organized and kept in an order so that whenever you are going to the class you are not wasting your time for collecting all the things that are required for the delivery of today's lesson. Now classroom calendar post कर दीजिए, homework schedule लगा दीजिए बोर्ड पे अपने क्लास के. असाइनमेंट जो है आपने देना है उसको पहले देख लीजिए,
कर लीजिए, बना लीजिए, और उसका शेड्यूल असाइनमेंट बोर्ड पे आपने देने के बाद उसको क्लास बोर्ड पे लगा दिया, so that those who are absent today in the class come tomorrow and see the yesterday's assignment given by Mr. Ajay Sharma. This is organization. ये मैं बहुत छोटे छोटे आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल्स, बिकॉज अदरवाइज इट विल टेक नियरली 6 hours, यानी कि 6 दिन का ये मॉड्यूल होता है जो क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं, जो मास्टर प्रोग्राम होता है हमारा सुप्रीम, then it is considered. Now there is no flexibility on the curriculum. This is 100% sure, but ability to convey instruction has to be yours. Curriculum you cannot change, syllabus you cannot change. हालांकि मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करना है अभी. Curriculum means every other instructional methodologies, strategies or activities that you may combine with the syllabus, that is called curriculum. So you must have the ability to convey the instructions. Now tailoring of instruction techniques to grade level, subject area, student level and style of learning, ये सब मैंने करवा रखे हैं अगले मॉड्यूल्स में, आगे आने वाले मॉड्यूल्स में भी होते रहेंगे. Now the thing is you have to vary your style and intensity of learning. Lecture का follow up with activity, ग्रुप डिस्कशन का कंक्लूसिव रिपोर्ट. जब ग्रुप डिस्कशन आप करवाएंगे, आस्क एवरीबॉडी टू राइट हिज पर्सनल रिपोर्ट, देन कंबाइन विद दैट ग्रुप विद विच ही वाज और शी वाज इज सिटिंग एंड डूइंग द टास्क. कंपाइल करिए एक जगह पे पूरी रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द टीचर. टीचर विल कंपाइल होल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड देन, जैसे कल मैंने बोला था, क्लास 6 ने सोशल स्टडीज पे एक प्रेजेंटेशन दिया है 6th, 7th, 8th क्लासेस के लिए, and that is their group task. I was talking about the communication, the last one. Now communication doesn't mean only verbal and written communication with your staff or students. This communication is the communication what you perform on social media also, that is also communication. What you put on social media, that is also communication. What comments you post on others postings, somebody else post, your friend on the Facebook which you might not have ever seen, but due to being in the same profession you might have made him the friend. अब उसने कुछ ऐसी पोस्टिंग कर दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, so you have to be very humble. किसी एक ने मेरे को लिखा था, सर आपका डिजाइन जो है सर्टिफिकेट का अट्रैक्टिव होना चाहिए. मैंने कहा there are two things in the life, either you go by my सूरत or you go by my सीरत. मेरे फेस वैल्यू से जाओगे या जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं प्लेस वैल्यू से जाओगे. वेयर डू आई स्टैंड. आपकी जो वर्डिंग्स होती हैं सर्टिफिकेट में, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट देन द लुक्स. लुक्स तो क्या है, मैं अब से 30 साल पहले बड़ा जवान था, दिखाऊंगा आपको कभी फोटो, कभी मौका लगेगा तो यू विल सी. अभी आपने बारे में ही सोचिए आप. लुक्स दे मे वेरी, दे मे चेंज, लेकिन जो आप आज कह रहे हैं, आज आप जो इंप्रेशन डाल रहे हैं, दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर फॉर ऑल द ऑडियंस, ऑल द फ्रेंड्स. नाउ ऑडिबिलिटी, सुनाई देना चाहिए अच्छा. क्लैरिटी ऑफ आइडियाज होना चाहिए. consistent line of communication with everybody, students, colleagues, administrators, parents, even community, vendors, सबके साथ. Flexibility to accept and accommodate reasonable ideas, requests and suggestions. जो न्यू एज प्रिंसिपल्स मैंने अभी देखे हैं, जहां मैं फिजिकल वर्कशॉप करने के लिए जाता था, they generally think कि मैं इस सुप्रीम चेयर पे बैठा हूं. Now the thing is, I am on the top of the world. Nobody can defy my orders and I am not bound to listen to anybody. But I am telling you, they are bound to doom also. ये सब जो चीजें अगर मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव मेंटलिटी फॉर सेल्फ. कभी मत करिएगा. फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा अपने अंदर रखिए. मैं आज भी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ. सर्टिफिकेट मैंने बोल तो दिया उनको, लेकिन आप लोगों के पास जो आएगा एक नए डिजाइन का आएगा, विच आई हैव स्टार्टेड वर्किंग अपॉन.
So with this, our rest of the 7 points have been, लेकिन फिर मत घबराइएगा, ये सारे के सारे पीपीटीज आपको मिलेंगे. यहाँ एक्सप्लेन करने में बड़ा होता मुश्किल, थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज हो तो मैं पावर पॉइंट शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं, एंड देन नाउ यू गो फॉर क्वेश्चन आंसर इफ यू हैव गॉट इट. Anybody can speak anything. Now your screen is up. You can unmute yourself and you can speak out your diets. कोई suggestion हो? कल hexagonal structure का suggestion मिला था. If anybody has got any other suggestion, you can just keep it up. Otherwise, we have got less than 1 minute to go out. Rule book जिन जिन को चाहिए हो, because it is nothing like कि मैं आपको दूं और आप कुछ भी कर लें उसके साथ. You have to edit it as per the requirement. अपना लोगो लगाएंगे, अपना स्कूल सॉन्ग लगाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह सब वैसे ही रहेंगे, रूल्स भी वही रहेंगे, प्रोसीजर्स भी वही रहेंगे, रूटीन्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, एवरीथिंग विल बी सेम. प्रीलूड चेयरमैन का आप लिखवाएंगे स्पीच, और फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट करके लिखवाएंगे तो प्रिंसिपल का होगा तो वो आप लिखेंगे. These are some editable areas. Otherwise, rules, procedures